Hello guys, welcome to the UGC NET exam corner. So in this video I will discuss about PG entrance test, common entrance test 2025. ये PYQ सीरीज कवर कर रहा हूँ जिसमें कि PG का जो भी पॉलिटिकल साइंस का एंट्रांस अब तक हो चुके हैं लास्ट 2021 से लेकर टोटल जो भी 2021 से लेकर 2026 तक ये टोटल 5 इयर्स का मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो में मैं अभी डाल रहा हूँ पार्ट 1 ये 2025 वाला जिसमें कि टोटल 100 MCQ आए थे पॉलिटिकल साइंस में और उसको कंप्लीट करने के लिए टोटल 80 मिनट्स दिए गए थे। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के थे। क्वेश्चन अगर लेवल की बात करेंगे तो लेवल यहाँ पर मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट तक था, मतलब कुछ पार्ट्स ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर बोलोगे तो मॉडरेट था लेवल। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। ओके, पेपर ऑफलाइन होता है जैसा कि पता होगा तुम्हें। ठीक है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर एलिजिबल टू टेक दिस कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट। ओके, सो 2025 वाला को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ओके क्वेश्चन को देखो मैं थोड़ा स्पीड में इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको स्पीड में देखना है, ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप स्पीड पे करके भी देख सकते हो, और अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दोगे। ठीक है, सो दैट मैं आने वाले टाइम पे भी और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is choose the thinker associated with the idea of hegemony. So which thinker is associated with the idea of hegemony? The correct answer is Gramsci. थोड़ा फटाफट लेकर चलेंगे सो दैट मैं 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाऊँ विद इन 30 to 40 मिनट्स। ओके, 30 to 40 मिनट्स में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। सो उसी स्पीड में लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको स्लो या स्पीड लगेगा तो वीडियो को आप स्पीड करके भी देख सकते हो। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मार्क्स। सो मार्क्स के कौन से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट उनका? यूटोपियन सोशलिज्म नो, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म नो, वेलफेयर स्टेट नो। सो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो है साइंटिफिक सोशलिज्म। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हु सेड दैट it is state is the march of God on earth? State is the march of God on earth. Who said this? So this statement is given by Hegel, GWF Hegel. So Hegel is the correct answer. Come to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो थ्योरी ऑफ फॉर्म। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म तो पता होगा, थ्योरी ऑफ फॉर्म कौन दिए हैं? ये प्लेटो दिए हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखोगे, थ्योरी ऑफ फॉर्म, फॉर्म कौन दिए? प्लेटो। थ्योरी ऑफ फॉर्म प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज दैट सोशल इनइक्वालिटी आर जस्टिफाइड इफ दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ टू द वर्स्ट ऑफ? So this is given by question number 5 is Rawls, John Rawls given that social inequality are justified. ओके, मीन्स सोशल इनइक्वालिटी अच्छा होता है, वो जस्टिफाइड है। ये कौन बोल रहे हैं? रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक लाइन एंड फॉक्स मेटाफर अकर? लाइन एंड फॉक्स मेटाफर कौन से बुक में था? लेवियथन में, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, या प्रिंस में, या द रोड टू सबजम? तो ये वाले जो प्रिंसिपल थे लाइन एंड फॉक्स वाले प्रिंस में थे। ओके, द प्रिंस बुक में लाइन एंड फॉक्स मेटाफर दिया गया था, जो कि कौन लिखते हैं? इसको लिखते हैं निकोलो मैकियावेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हु बिलीव दैट द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, कौन बिलीव करते हैं डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन वर लिंक्ड विच ईच अदर एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस इज द टाइप ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन। सो व्हाट इज द लिंक? द लिंक इज लेनिन। ओके, लेनिन। तो लेनिन कहते हैं कि ये क्या है? ये दूसरे से लिंक है। हु बिलीव दैट गोल ऑफ यूटिलिटेरियन स्टेट इज लिबर्टी रेदर देन हैप्पीनेस। लिबर्टी होता है यूटिलिटेरियन स्टेट का गोल। तो ये कौन कहते हैं? तो ये कह रहे हैं मिल। ठीक है, कौन कह रहे हैं? मिल, जेम्स मिल। ओके, इनका पूरा नाम जेम्स मिल है। ओके, सॉरी जेएस मिल, जेएस मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये तो पता होगा, ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस कौन दिए हैं? तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस देने वाले हैं कौन? रॉल्स, जॉन रॉल्स, व्हील ऑफ ignorance. Okay, then the next question is question number 10. Question number 10 देखो, who argue that the absolute power of the sovereign on the basis of irrevocable contract among the people to surrender their natural rights to authority. अपने people to surrender their natural rights to whom? To the authority. So who said this statement? So this is given by Hobbes, Thomas Hobbes. So Thomas Hobbes has given this statement. Okay, Thomas Hobbes. Next question. Question number 11. Who was the first proponent of the liberal theory of state? So this is John Locke. Okay, liberal theory of the state, and he was the first proponent. Then the next is
who described imperialism as the highest stage of capitalism. Very important statement. ये बार बार ये पॉइंट आता रहता है, यूजीसी नेट में भी आता है, पीजी एंट्रांस वगैरह में भी ये देखो फिर आ गए. सो ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है इम्पेरियलिज्म. सो कौन बोले हैं? वो बोले हैं लेनिन. और लेनिन का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है. इसके पहले भी लेनिन वाला एक सवाल आ चुका है, ठीक है. उसके क्वेश्चन नंबर 13 देखो. क्वेश्चन नंबर 13 है, हु आर्ग्यू दैट स्टेट एग्जिस्ट करता है नॉट ओनली फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ बट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. सो दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Following argue that general will is the foundation of legitimate law. General will is the foundation of legitimate law. So this statement is given by Jean-Jacques Rousseau. Next question. With whom is the authority of the philosopher king associated? Who talks about the philosophy and philosopher king? Who talks about? So basically this is the concept of Plato. Okay, Plato is the correct answer. Then the next question is, question number 16. Okay, come to question number 16. What according to whom, according to Hobbes, are the dash are the fundamental human motivation? So the correct answer is fear and self-interest. Okay, fear and self-interest, common human motivation. Okay, fear and self-interest according to Hobbes. Self-interest means people are selfish. Okay, human motivation, so people are selfish. And the next question is question number 17. Which tradition consider the state as a tool of domination and believe it to be legitimate? So the correct answer is अनार्सिस्ट होंगे इसके, जो कि कंसीडर करते हैं टूल ऑफ डोमिनेशन स्टेट को एंड बिलीव इट टू बी द इलिजिटिमेट. अनार्चिस्ट अराजकता फैलाना चाहते हैं. हु पाइनियर द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच? तो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच को कौन दे रहे हैं? तो ये दे रहे हैं ईस्टर्न, ठीक है. हु अप्रोच प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर? हुज अप्रोच इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर? So the correct answer is normative. Okay, normative is very prescriptive, very prescribe in nature. Next question. Which type of democracy emphasize thoughtful discussion and debate before making decision? So which type of democracy that talks about this? That is deliberative democracy. Yes, this is the correct answer. Deliberative democracy, discussion and debate. Okay, deliberative means what? Discussion. Deliberative means क्या? Debate. Next question. In which theory of state the power of government is limited and the right of individual are protected by constitutionally established norm and institution? So in which theory of state? The correct answer is liberal democratic. Okay, next question. Which theory of feminism locate the root cause of women's oppression primarily in patriarchal gender relation? So this talks about radical feminism. Okay, next question. Which of the following argue that capitalism and patriarchy are interconnected system that cause women's oppression? So the correct answer is socialist feminism. Okay, socialist feminism that talks about that capitalism and patriarchy are interconnected. Okay, next question. Which of the following is skeptical of the idea of universal truth and objective reality? Or universal truth and objective reality. And the correct answer is postmodernism. Okay, postmodernism is the correct answer. Not modernism, it is postmodernism. Okay, next question. Which of the following is based on assumption of the individual as the rational agent with a capacity to deliberate and make an informed choice? And the correct answer is positive liberty. Positive liberty, they talks about to deliberate and make an informed choice. Now the next question. Who argue that human freedom is impossible under the condition of exploitative social relation? This statement is given by Karl Marx. Then the next question is, which approach to political theory considers equality as a core principle? Equality as a core principle, this is the concept of normative approach. Normative approach is the correct answer. Next question. Which of the following statement is true? So which one is true? The right answer is option number C, that liberal tradition of egalitarianism emphasize equal rights and freedom. See, equal rights and freedom. Egalitarian means क्या? Equal rights. Okay, so option C is true. Okay, here the question asks you about which one is true. Okay, so which one is true? Option C, liberal tradition egalitarian, this is true.
Next question, which of the following conditions provide the best defense against social exclusion? The best defense of social exclusion. And the correct answer is welfare state. Okay. So not the separation between state, this is incorrect. Active role of the state, incorrect. Authoritarian state, incorrect. Welfare state is provide the best defense against social exclusion. So the correct answer is welfare state. Next question. What is procedural justice? So the procedural justice is that requires meticulous following of rules. Okay, meticulous. That is procedural justice, means it's follow some rules, some fixed rules. Okay, next question. Who proposed that justice prevail when every departure from equality can be rationally justified? So rational equality can be rationally justified and every departure. So who proposed this kind of justice? This is given by Rawls, John Rawls. Next question. What does the multiculturalism stands for? So multiculturalism stands for a reconciliation of aspiration to political equality with the fact of social and cultural differences within liberal democratic state. Okay, वीडियो को अच्छे से देखोगे और रिवाइज कर लोगे एक दो बार सो दैट ये अच्छे से तुम्हें एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आप इसको मेमोराइज कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. By which amendment the word secular and socialist जैसे आया क्या मारोगे 42nd Amendment Act. That's it. Next question. Who described preamble as the keynote to the constitution? Preamble is the keynote to the constitution. Who said this? This statement is given by Barker, Ernest Barker. Okay, next question. Equality, article 15 and 16 of the Indian constitution provide for which type of equality? So this talk about social equality, of course. Yes, the social equality is the correct answer. Next question. Which article of the Indian constitution deals with life and personal liberty? Article number 21. Okay, article 21. Next question. Article direct the states to minimize income inequality. So this is article number 38. Okay, 38. It is about income inequality. Provision of our constitution was examined and recommended upon by the Sarkaria Commission. So here is the center-state relationship between the center and state government. This is the correct answer. Choose the correct one. Means in a sequence, choose the correct one. Which one is correct? So Prime Minister, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, this one is the correct question. Then next question. Okay, so continue here. Next question is, what is a judicial review? So judicial review is power of Supreme Court to review the decision of High Court. Power of Judiciary to review the constitutionality of law and action. Option C. Option C is the correct answer. Next. Choose from the following the law that provide for special power to Gram Sabha in tribal area. And the correct answer is PESA Act. PESA. That is a Panchayat extension of Scheduled Area Act. Okay, PESA Act. Next question. Which one is the correct one? So the correct one is Consti passed by the Parliament, constitutional body. Election Commission of India is a constitutional body. This is correct. Following party has not been guided by regional aspiration. Not been guided by regional aspiration is a Communist Party of India. Okay, DMK is guided. Biju Janata Dal is a regional party. Telugu Desam is a regional party, but not been guided. So Communist Party of India. Okay, CPI. Then next, how do you conceptualize a set of policy program that aim to address the discrimination and create opportunity for disadvantaged group? So this is the affirmative action. Affirmative action is the good thing. So set of policy for disadvantaged group. Dimension of the Indian state is highlighted by Unlawful Activity Prevention Act. So which type of dimension? This is the coercive dimension of the Indian state is highlighted. Next question. Which of the following pair is correctly matched? Gandhiji, Ambedkar, Annihilation of Caste, Gandhi, Nehru, Discovery of India, Gandhi, My Experiment with Truth. Okay, and Raja Ram Mohan Roy, Gita Rahasya. So 46, Ambedkar, Annihilation of Caste is the correct. Is correctly matched.
तो यहाँ पे थोड़ा देख लोगे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, उसी हिसाब से लगाना है। उसके बाद आगे देखो, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज द नेचर ऑफ किंगशिप इन अग्नसुत्ता। अग्नसुत्ता ये इंडियन कॉन्सेप्ट वाला आ गया, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, किंगशिप इन अग्नसुत्ता। सो द करेक्ट आंसर इज it is chosen, the king is chosen by the people. Okay, chosen by the people, yeah, this one is correct. Okay, then the next question is, who is associated with the mandala theory. Mandala theory is associated with Kautilya. And where is Vedvyas concept of Rajadharma located? So this where is the Vedvyas concept of Rajadharma located? Mahabharata. Okay, next question. Question number 50. Which one of the following is true about Abul Fazl theory of sovereignty? So this is which true. The question asked about true. Which one is true? So the true one is non-religious type के थे वो थोड़े, ठीक है, तो related to the religion of monarch, to the people, not religion को ज़्यादा वो follow नहीं करते थे, तो आप बोलोगे कि sovereignty was not to be related with any particular religion. Okay, option C is the correct. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताओ क्या है उनका। तो उनका जो मेन वो फोकस करते हैं, वो करते हैं सोशल रिफॉर्म एक्टिविटी। ओके, सोशल रिफॉर्म एक्टिविटी, एंड हर फोकस वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ द विमेन। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. Gandhi's concept of Swaraj. Gandhi's concept of Swaraj means self-rule. So what was the Swaraj? That everyone had the freedom to resist authority. Resist means to remove authority, to question the authority whenever needed. Okay, next question. Nehru's strategy for establishing socialism. So his strategy was basically parliamentary politics. Okay, parliament should be supreme, parliamentary politics. Next, concept of total revolution. Total revolution means Jayaprakash Narayan. Just stick out, and this is lollipop question. Smile and move ahead. Who believed that nationalism was a narrow form of patriotism that was anti-spiritual and anti-human. This statement is given by, means the type of nationalism, form of patriotism. This is given by Tagore. Next question. Purpose of civic culture. So the purpose of civic culture. What is the purpose of civic culture? It makes to develop fully participant culture by encouraging parochial political culture, and मेक्स डेमोक्रेसी डल बाय सब्जेक्ट कल्चर। तो इसको आप खुद देखोगे और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में 56 का आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म? व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म means it is a critical of the institutional network of modern state, examine how like rules. So the correct answer is B, it is critical of institutional network of modern state. Next, question number 58. What is primary objective of a political party? So the primary objective of the political party is to create public opinion. No. Educate people. No. Educate people. No. Capture power. Okay, next question. What is proportional representation meant to achieve? It means proportional representation means to achieve, it helps to establish government by single party, create legislative body that reflect overall distribution of public support for each, strong, or it eliminate possibility of adequate representation of minority. No. So it is to create legislative body that reflect the overall, option B. Next question. Author of the book Imagined Community. Imagined Community is given by Anderson, Perry Anderson. Perry Anderson is the correct answer. इसको एक बार चेक कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर एक बार चेक करोगे। Then question number 61. What is the essence of post-colonial nationalism? So post-colonial nationalism is self-determination. Next question. Huntington claimed that there have been three waves of democratization. When did the second wave commenced? The second wave commenced after World War II. Okay, so the World War के बाद होता है। इसके बाद देखो कौन सा जो है वो ट्रू है। तो ट्रू कौन सा है? फेडरलिज्म necessarily weaken a state, or federalism is necessary condition for democracy and unity in diverse society. Option A is the correct answer. Next. First one to apply the comparative approach to the study of politics, and the person is Aristotle. Choose the correct statement. That the correct statement means about capitalism, society into classes,
Society on the basis of honor. Capitalism reorganize society on the basis of culture. Capitalism reorganize society into classes on the basis of ownership of land. Option A is the correct answer. Next, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे भी फाइंड करना है कि करेक्ट कौन सा है. कॉलोनियलिज्म के बारे में यहाँ पूछा गया है दैट colonialism was the result of desire of western country to develop liberal democracy. Colonialism led to economic property or sought to protect indigenous nation. Colonialism was a consequence of the growth of capitalism and its quest for more profit by controlling resources. So option A is the correct answer. Next, देखो मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर रहा हूँ. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है या फिर कुछ लगता है चेंजेस होगा तो अपने रीज़न के साथ यू कैन लीव इन द कमेंट बॉक्स. ओके, and your comment is most welcome. Any feedback, any suggestion, you can drop in the comment section. I will read and apply to everyone. Next question, which of the following country can be considered as an example of settler colonialism? So the settler colonialism which can be considered an example. USA. One intellectual book, Black Skin and White Mask. This is given by French Fanon. Okay, African person, French Fanon. Next question. What kind of government exists in USA? So in USA, there is a federal type of government. Okay. Next, which of the following is an ideal example of application of the theory of separation of power? So separation of power, of course, USA. China, no separation of power. UK, no separation of power. I mean, the ideal example of the application of theory of separation of power. So which one of the ideal example means USA. Okay, although India are also the part of separation of power. Okay, but here the question talks about ideal example, so USA is the correct answer. उसके बाद देख लो फटाफट. How does realism explain the nature of international politics? यहाँ पे IR वाला टॉपिक शुरू होता है, तो IR टॉपिक को भी देख लेते हैं. तो इनका जो मेन होता है पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं. ठीक है, तो देखो फर्स्ट में ही बात कर लिए, ये खत्म. पावर पॉलिटिक्स मतलब रियलिज्म मीन्स क्या? रियलिज्म मीन्स होता है पावर. ठीक है, रियलिज्म मीन्स पावर पॉलिटिक्स. फिनिश. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन. सो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा ये देखोगे, न्यू रियलिज्म की बात कर रहे हैं. न्यू रियलिज्म पावर पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ इगोइज्म, पावर पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ अनार्की. न्यू रियलिज्म क्या? रियलिज्म primarily explains power politics in terms of anarchy. Realism does not care about the balance of power. No, the question asks about which one is correct. Correct कौन सा है? Choose the correct. So the correct is option B. Neorealism explains about politics in terms of anarchy. Next question. Which treaty marked the end of First World War? The First World War is Treaty of Versailles. Treaty of Versailles. Okay. Under which policy did the USA provide fund to Western Europe and brought those countries under American influence during Cold War? So that plan, one plan, that is Marshall Plan. Okay. Next question. What is globalization? Very easy and important question. That what is globalization? Disseminated by large-scale force like nation-state, advanced world, that is in the north. It is a process of initiated by state of the global south, a response to citizen demand for global peace, or created by large nation-state of the entire world. So option A is the correct answer. Okay. Next question. In which year World Trade Organization 1995 TNC operates in agribusiness? Which one of the TNC transnational company operate in agribusiness? Okay, so that is Manstron, no? Yes, Monsanto. Monsanto. Okay. Next, question number 78. What is World Social Forum? What is World Social Forum? World Social Forum is a social forum. Okay, so it is a global alliance or it is a forum of civil society organized to collaborate with the force promoting globalization. Next question. Which international agreement aim to reduce greenhouse gas emission that contribute to global warming? The answer is Kyoto Protocol. Okay. Next question. What is the WMD? That is mass destruction. Okay. Weapon of mass destruction. Next question. Treaty on the Non-Proliferation (NPT) came into existence in 1970, and Twin Tower of the World Trade Center take place. Terrorist attack, Twin Tower. So 2001, 11 September 2001, that is terrorist attack on Twin Tower of World Trade Center. Next question. Who championed the idea of freedom from want? Freedom from want, both B and C means
B. Amartya Sen, and C is Mahbub al Haq. Okay, freedom from want. Convention on the Protection of Rights of All Migrant Worker and Member of Their Families came into force in 2003. Okay, 2003 is the correct answer. Next. Concept has been replaced by new concept called Global South. Global South, new concept, it is replaced by Third World. Okay, next question. Who defined administration as the organization and direction of human and material resource to achieve desired ends? This is the type of or means meaning of organization. Okay, Fipner, J.M. Fipner बोलते हैं कि organization and direction of human के बारे में. ठीक है, next. Father of American public administration. So the American public administration, Goodnow. Yes, the correct answer is Professor Goodnow. Okay, next. And the father of public administration, that the answer is Woodrow Wilson. Okay, mark it. That here the question is father of American public administration. So the answer is Goodnow. If the question will be father of public administration only, then the answer will be Woodrow Wilson. Next question. Experiment conducted by Taylor intended to understood which type of statement? Scientific management. Okay. Motivation work Taylor कौन से किए थे? Mental revolution, human relation. So human relation. Okay. Next question. Which of the following is not a behavioral characteristic of bureaucracy? And the behavior is a role specificity, not a behavioral characteristic of bureaucracy. Rule orientation उसमें होता है ब्यूरोक्रेसी में, इम्पर्सनैलिटी भी होता है, रैशनैलिटी भी होता है, लेकिन रोल स्पेसिफिसिटी ये दिस इज नॉट अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल 10 क्वेश्चन अब बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं और इसको रिवाइज भी करोगे, वीडियो को थोड़ा लाइक करके अपना ओपिनियन बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है. ठीक है, और इसमें आपको क्या कंटेंट चाहिए और उसको आप कमेंट करके बता सकते हो. तो नेक्स्ट उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लासिकल थ्योरिस्ट अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंस टू. क्लासिकल थ्योरी सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? तो वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं. ठीक है, और ये जो 10-12 क्वेश्चन है ये है तुम्हारा वे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से. ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला यहाँ पे कवर कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज well known for Hawthorne experiment. Hawthorne experiment Mayo करते हैं, Elton Mayo Hawthorne experiment, and considered one of the pioneer human relation approach, that is Elton Mayo. Ecological approach, developed the ecological approach. Again the answer is Ricks. जैसे ही ecological approach आया administration में तो आंसर लगा देना Ricks, Smile, and the answer Ricks. Next question. Choose the correct one. Which one is correct? That is new public administration uses business practice and tool to make government function more like a private enterprise, or new public is a reformative approach and aim to improve government service and make them more responsive to the need of the public. Very good answer, that is option C is very correct answer. Okay, next. In which year performance budget was introduced in India? 1968 में performance budget को लेकर आया गया था, पर कब? 1968. नेक्स्ट. द बलवंत राय मेहता कमिटी जो कि आया था वो किससे रिलेटेड था? पंचायती राज ना, वच कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी, पंचायती राज. ऑप्शन बी. नेक्स्ट. पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. रूरल ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. कौन से अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिश किया गया अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो अर्बन वाला 74 में हुआ है और 73 में क्या हुआ है? तो क्या बोलोगे? पंचायत. रूरल वाला ये देखो ये हुआ था. 74th में क्या हुआ? अर्बन लोकल. 73rd में क्या हुआ है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. 74th में क्या हुआ है? अर्बन लोकल. क्वेश्चन क्या पूछा है? अर्बन लोकल. नेक्स्ट. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये एक्ट कब आया? 2013 में आया था ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार घूम फिर के यहाँ वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. देन द क्वेश्चन नंबर 99. इंक्रीमेंटल पॉलिसी मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये क्या है? व्हाट इज इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी? सो इसका आंसर बताओगे तुम, कमेंट करोगे. मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ओके, ये कब से है? ये 2005 से चल रहा है. ओके, सो 2005 से चल रहा है. इसका आंसर बताओगे. इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मेकर यूज लॉजिक टू फाइंड बेस्ट पॉलिसी टू अचीव देयर गोल्स, और इमीडिएट प्रॉब्लम, और रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन ग्रुप, रेस्पॉन्स टू डिमांड फ्रॉम पॉलिटिकल एनवायरमेंट, और इमीडिएट प्रॉब्लम विद शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन,
एंड लॉजिक, तो ये क्या है, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन ए होने चाहिए। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? 1999 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे। सो इस प्रकार से हमने टोटल 100 MCQ जो कि 2025 में पॉलिटिकल साइंस के पीजी एंट्रांस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको कवर किए। वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।